everyone, and welcome to the series of knowledge sharing session. This side Montu Verma, and I am a procurement expert. I hope you all are safe and sound with your family members and with your colleagues as well. So दोस्तों जय माता की फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वेरी हैप्पी नवरात्रास टू ऑल ऑफ यू। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपके जो सपने हैं वो साकार हों और माँ का आशीर्वाद आप सब लोगों के ऊपर बना रहे। सो फ्रेंड्स, टुडे वंस अगेन इट इज संडे एंड व्हाट इट इज नॉट 2 p.m. because of majority of member demand we are meeting at 11 a.m. and we are continuing our journey of knowledge sharing together as procurement wale, by procurement wale and for procurement wale. And it's our second Pan India Buyers e-meet. Guys, thanks for being us today, and it is my pleasure to see all of you once again. So first of all, I am very curious to know that from which city you are joining us. Can you please text in chat box so that we can move forward? आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, किस सिटी से ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज चैट बॉक्स में अपने नाम के साथ में लिख दीजिए। पुनीत तिवारी जी गुड़गांव से हैं, प्रथमेश मुंबई, अंकित बड़ोदरा and so on. Thank you. So दोस्तों, before we really start this meeting, it is very important aspect for everybody to understand that today why we are here. I mean, why we are meeting today. So guys, let me tell you, we gathered here with a purpose, and we are here to exchange our ideas, our knowledge, our thoughts for empowering the procurement community, right? And I need a promise from all of you that today it should not be a single way communication, it should be a both way communication. And let us exchange our ideas and thoughts for procurement. Okay? And let me share with you the journey of procurement वाले communities so far. अभी तक हम लोगों ने क्या किया, कहाँ तक पहुंचे। सो एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड आप सभी लोगों को सबमिट करना चाहता हूं। कुछ और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी ले लेते हैं। ओके, सो let me tell you when we started this procurement wale community. April 20, when it was pandemic situation across the world, when everybody was working from home, then एक दिमाग में थॉट आया कि क्यों ना एक कम्युनिटी बनाई जाए जिसमें प्रोक्यूरमेंट प्रोफेशनल हो, और व्हाई वी शुड नॉट एक्सचेंज आवर आइडियाज। एंड जब हम सब लोग घर पे थे तो बड़ा अकेला फील कर रहे थे, पता नहीं क्या होगा आगे आने वाले समय में। बड़ा दिमाग में थॉट्स इधर उधर घूम रहे थे हमारे। थोड़ा सा फ्री टाइम भी था दोस्तों, तो माइंड में थॉट आया, चलिए एक ग्रुप बनाया जाए, एक कम्युनिटी बनाई जाए। देन आई स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ लिंक्डइन प्लेटफॉर्म ओनली, और वहाँ से आज सब लोग हम जुड़े हैं। Okay, then why we should not share our knowledge, our ideas together? Then we started this journey from that time, and I never thought that इस community में आज इतने सारे लोग होंगे, आप जैसे प्रोफेशनल लोग हमें ज्वाइन करेंगे। और you will not believe कि 5 लोगों को अभी तक इस ग्रुप से जॉब मिली है दोस्तों, और आप लोगों की हेल्प से, आप लोगों के सपोर्ट से ये पॉसिबल हुआ है। एंड आज हम मिल रहे हैं तो एक पर्पस है इसका। पर्पस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमें अपने आइडियाज एक्सचेंज करने चाहिए, अपने थॉट्स एक्सचेंज करने चाहिए। तो इतनी दूर जब हम आ चुके हैं तो व्हाई वी शुड नॉट थिंक समथिंग क्रिएटिव, लाइक
why we cannot do something different, why we cannot help each other during this pandemic situation. Okay. And moreover, I got feedback from you guys that this group or this community on WhatsApp, on LinkedIn is becoming more responding community. आप और भी ग्रुप्स में होंगे, आप और भी कम्युनिटी में जुड़े होंगे, बट लोग यही कहते हैं मोंटू जी, ये कम्युनिटी, ये ग्रुप इतना अच्छा बन चुका है कि लोग क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं. कोई भी वेंडर्स की रिक्वायरमेंट है या कोई भी हमें जॉब की रिक्वायरमेंट है, लोग जॉब भी शेयर करते हैं, लोग वेंडर्स भी शेयर करते हैं, काफी सारे आइडियाज एक्सचेंज भी होते हैं ग्रुप में. तो दोस्तों, ये अभी तक की जर्नी थी, आप सब लोगों के सपोर्ट के साथ में और आप सब लोगों के हेल्प से ही हुआ है ये सब. और आज हम दोबारा मिल रहे हैं और मैं बहुत बहुत ज़्यादा आपका आभारी हूँ. आप इतने बिजी शेड्यूल में आप हमसे यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं. ओके, सो दोस्तों, आज का एजेंडा नहीं कहूँगा मैं कहूँगा आज हमने कुछ 4-5 टॉपिक्स बनाए थे, तो उसके ऊपर डिस्कशन क्यों ना किया जाए. और I would invite all of you that please exchange your ideas and thoughts over this point. So first point is technology change क्या हुआ है during the pandemic situation. आप में से कोई भी स्टार्ट करे इस क्वेश्चन के ऊपर या फिर इस पॉइंट के ऊपर अपना थॉट शेयर करे कि मार्च से लेके जब कोरोना ने एंट्री की थी इंडिया में, पेंडेमिक सिचुएशन स्टार्ट हुई थी, वहां से अब तक अपनी टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आया है. प्लीज शेयर योर थॉट्स ऑन दिस पॉइंट. थैंक यू सो मच. हेलो मोंटू जी, कैसे हैं पुनीत तिवारी जी आप? ऑल गुड. यू आर फर्स्ट ऑफ लुकिंग, ऑल आई वुड, हाँ, यू आर लुकिंग सो नाइस. थैंक यू मोंटू जी. So first of all, I would love to congratulate each and everyone for this in this group, to all our members, that this is almost our 6th half yearly anniversary. We will be just completing our 6th month in this group from 20th April to 20th October. So first of all, thanks to each and every participant in this group. Now coming to the point, what technological changes have taken place post this COVID era? Definitely, people are going from offline to online. Pre-COVID, people used to work from home, work from office. We had a fixed routine of 8 to 5, 10 to 6, whatever was the time. Post-COVID, people are flexible working from home. Now the companies, looking at the safety concerns, have given this opportunity to the employees that you can work from home. And I don't find that there has been any change in the result. In fact, the productivities have increased while you're working from home, because the time hour you are giving to your organization is increasing. You are creating more new ideas. The what I want to say is that we are meeting people online. We are developing meetings online. The vendors who were not so frequent to use those technology when we were working from office, they have started adopting the new technology. Maybe they have started taking the meetings over the Microsoft, Teams, Zoom, and many other platforms. So for me, the most important change from India point of view is that people have taken that adaptation policy, that whatever be the situation, we are ready to accept, we are ready to take the new challenges, whatever comes or go, we are there to support our country, and the market will move on. Even if you are working from home, what will be the situation, we will carry on. Whether it's a face-to-face meeting or it's an online meeting, whether it's a webinar, it's a seminar. In fact, I will say post-COVID, the market share of all this online platform has almost doubled. It has almost doubled. True, very true. People are going from their traditional way of working of office to going on a new approach of working from home and giving all possible result as they can. Any other idea from any other group members? Definitely, apart from the meeting parts that we had during COVID period, the most important thing that has happened is because of the COVID, our supply chain logistic was completely stopped or slowed.
But in this period, what many companies had adopted is e-invoicing or invoicing on a scan copy basis, so as to facilitate the invoicing part, so as to facilitate supply chain and production, which should not have been hampered in COVID. So this is one of the part of technology that many companies have adopted. So it is also one of the things which should consider technological Right. aspects. Yeah, basically, Hello guys. currently digitalization has been improved drastically. In last, especially last 3 to 4 months, if you see that procurement is predominantly based on the paperwork, and this paper need to be produced or need to be secure for audit purposes, and lot many other regulatory requirement. And we never thought that this digitalization will give us a new ideas and new life for that. So I believe the paperwork has reduced, and the best part is that procurement people always feel one thing is that that we required a physical presence. Vendors should come as a physical presence. We need to meet them. We need to finalize each and everything. Now this pandemic has given a new life that okay, we can deal with through online platform also. Online, we can close lot many bigger deal through discussion also. So the physical movement has converted into the online platform. So these things has given a new ideas, and definitely this will help organization who believe in making sure traveling to their employee from one place to another place to get orders and interaction with the people. So this will certainly give them a new hope. Okay, we can reduce this particular cost in traveling, or we can give them a online platform so that their interaction will be more and more going to be happen. Yes, one thing is sure that the people who believe in working from 9 to 6 or 9 to 7 and traveling from 30 kilometers or 40 kilometers every day. So this has given definitely one thing is sure that people have reduced their traveling time and giving a lot of productive time by through online process. So this is which I am experiencing. I can say many people are also experiencing the same thing. Definitely, sir. Hello team. Hey, good morning, friends. Hi, Sorry, Pradeep ji, how are you? Puneet. Yeah. No. Yeah, Pradeep ji, good. continue. Thank you. How are I you, recently Pradeep joined ji? this group. Yep. I am good. Thank you so much, Montu, for And welcome and thanks for joining us. Please go ahead. Yeah, I recently joined this group, and I have got a reference from one of my colleague, and he mentioned this one of the group is going on, wherein I was connected in the ISM group, wherein we were exchanging the idea. But I think there are so many procurement team people who are connected here, and we can get a help to each other. So I like this group, and I would like to have a more interactive session with all of us, so that we can exchange ideas. Definitely, I can learn many things from this platform. Is what is expected here. I have one different opinion here on the productivity. Like, we are doing work from home is fine. We are saving the transit time is also fine. We are saving almost 3 hours, 4 hours of traveling time, because we all are mostly working in the metros, and the traveling time is high in every city, right? But is there really a productivity is improved? Because I see there is a lot of increase in the mails, because we do not have the one-on-one face-to-face interaction with our team members and our colleagues. So this has changed with the in the mail, and I see there are a lot of mail in my email box, and that is eating my productivity. I don't know about the other people. I'm trying to see how can I reduce my email timing, but because everybody is on mail and there are so many people in copy, I have to look into each and every mail whether this is actionable or not, and
and most of the time is eating to scanning the mails, and because every mail is required your attention, and maybe some of the action, maybe one line action, or the sizable amount of action is required. So that is eating the productivity actually. So when I look at when I was in office, and I used to have 8 hours working here, and now I am giving more than 12 hours here, but still productivity, I don't see any change in the productivity for me. Maybe the other people have a different opinion, but I see there a good amount of time is eating by the emails here. Adding to this, Pradeep ji and Sumit ji, I will just add one thing. Like every company has got a fixed category spend. So maybe like traveling has got its own spend, its own budget. So when you are working with MNC companies, there are higher management people who travel frequently. So post COVID, that spend has come down. So maybe drastically, if I talk about my organization, the spend has come down by 80%. So my organization is thinking to implement or utilize those spend in some other area for the development of the people or for the development of the organization. So this is also one of the advantages that recently post-COVID the companies are looking into. And Pradeep ji, like you said, yes, the mails has increased, but again we can have a call over the phone that will help to reduce the mail exchange also. But this is my thought process. Hi, Montu and team. Good morning. Vivek here. Hi Vivek, how are you doing? And Jai Mata Di. Jai Mata Di. I think I am absolutely agree with Pradeep. The coordination between the team is very difficult. For certain circumstance, it's okay. We can do the work from home, but continuously it's very difficult. See, purchase is the role of the coordination between all of the department. Like we need to be discussed with the finance, we need to be discussed with the MPNL teams, we need to be discussed with the technical teams. So it's very difficult to do the coordinates between amongst them. So a lot of mail it's coming here and there, and a lot of teams. So we are losing our productivity. For certain extent, that is okay. See, due to the pandemic, we are working from home and we are managing Shodho somehow. But continuously being in the manufacturing industries, I don't think so. It will increase our productivity, or we can manage the work from home. So from the technology perspectives, yes, now the paperwork has reduced, correct? Now we are releasing the e-POs. Everything is we are doing through the e-platform. We are taking the quotation through the e-platform. We are negotiating on the e-platform, and we are releasing the PO e-platform. That is a very good plus point. Now the companies are looking for the e-platform, another as compared to these earlier we have a practice. Now we are taking the PO from in the printout, take it the sign, and then sending the PO to the supplier. So that is one of the benefit. Very good morning, Montu. This is Bala Narayanan. How are you doing? And very good morning, everyone. Montu, am I audible? Yes, Bala. Yes, Bala, you are audible, and welcome, and thank you for joining us. My pleasure, Montu. Nice seeing you. So I have 2 points to register here. First, I just wanted to do a follow-up with Pradeep. That absolutely correct, because in today's world, face-to-face interaction is very essential for building the harmony between the stakeholders. That is not there. Even if you take a call, even if you give an email, that's absolutely not going to serve the purpose when we directly interact. That's one thing I want to say. Regarding the productivity, we have the flexibility of working whenever we want. That gives us, we are working for too long, but if you see, the productivity still remains the same. We work for larger time. That's what I feel. The next, on the technology, Montu, it's a very vast subject, but I just want to thank you for asking this question. One thing which came in my mind is all the technology providers, they are not only forefront in the technology now. After COVID, they are forefront in their innovations. That is why it is driving at a very good phase in the market now. So this is my point to share more. Very true, Val Narayan, and
thanks for putting your point of view here. Thanks, Montu. I think Muntu, I think we need to be asked to the every participant what will be the challenge after the COVID this pandemic situation. Once some of them has already resumed the office and the manufacturing has already started, the operation has already started. So which type of the challenge people are facing? Yes, very true. So I think everyone can share their opinion on that so that it's help to the other as well. For the Yes. same type of the situation. So Yeah, very good morning, Motu and team. Hi, this is Shiva from Mumbai. hi Shriram, good morning. How are you? Yeah, I'm good. Shriram, can you please introduce about yourself, from where you are joining and what is your exactly background? Yeah, actually, right now I'm working with one of company in Mumbai, Godrej, uh, and working about in procurement function about 13 years. And work with means the company like EPC is the heavy fabrication kind of company, as well as the in auto industry also I work out. So my opinion about is in this last 6 months, which I observed that is completely changed the mode of operations which we do on regular basis in the procurement, and the new challenges is come up with to managing the material on time is a first is very difficult in the industry. The partners which are facing the cash flow issues at their end also, and then secondly operations issues are also they are facing. So one of the challenging part is coming is that to have we need to be develop a good supplier relationship and the rapport with the suppliers. One thing. Secondly, this is the right time to explore the new suppliers or vendor base, because if you find that the most of the suppliers those are pre this COVID stage is not that much not improved. But now if we see, they we need to again need to explore the right suppliers. Those are the hungry for this kind of business. So these are the things are there, and this COVID-19 rightly, which is mentioned, the productivity issue is there. Same thing is here also. We are putting more and more time in our day-to-day hours, but still the productivity is not that much, because yes, digitalization is helping us, but simultaneously is not getting the impacted for the long time. Because in digitalization, what we finding is that for a few times or case-to-case basis, the issues are getting resolved, but not on the long-term basis, issues are getting resolved. So yes, but both things are very important, and digitalization is also important because now the management is very forcing for the digitalization. And right now also like developing the apps for the, so first of all identifying the areas where we can convert the manuals to the digitalization. Like now we started with the ASN, we started the web-based procurement, where the suppliers can submit the codes online. We can evaluate that. Internal communication workflows are that also get changed to the digitalization. Many apps, internal apps we develop to have for the internal stakeholders, that really get help to our stakeholder management in this situation, because we all are working in long distance, and where the networks and is now network issues are new normal facing. So in that case, we need to have more digital platforms to be available for the stakeholder management. So that we have get the better benefit of that, which I want to mention here. And one of the conclude conference I attended for this arranged by the CIA. There is one kind of comparison. If you find the technology which the other countries are adopting
to their operations. Like they are now, China is now going for the drone deliveries are there. They already started. Dubai, if it goes into Dubai, there are now passengers also going for the drone. Then the AI technologies. Then if you find artificial intelligence, Internet of Things, blockchain. So these are the many things are coming up in the market. So we need to really use this platform to share the new ideas, which in terms of the digitalization. So everyone can have the ideas which are implemented and successful. So that same can be follow or take the trials at their end also. So this is a rightly good platform, and thanks Motu for having such an initiative. What we you have thought about that, and now it is really helping each of us. Thanks. Wanted to add one more thing apart from this discussion. I think we must actively participate in one thing, is that we should enlarge and grow this, the member community what we have. I believe we have close to 500 people or 450 people right now within this group. So we must put together one's hand at here that we should push at least to 2,000 or 2,500 people in this group by adding more and more our colleagues or knowing the people within this group or outside this group. So the journey should increase by adding the more and more people. The intention of saying this thing is, if you see during this pandemic, many people have suffered because of losing their jobs or change of their location. This is basically a routine things is going to be happen the entire world. So if we have a more population, so the opportunity window is always be more. So as I am keep trying one thing that I should be actively participate in LinkedIn page sharing and LinkedIn, your article to be liked. Then you have a YouTube, subscribe. Recently, you have launched a very good page that is Facebook. I have seen that and I like that, and I sincerely appreciate your effort that you have also come on that platform. Try one more thing is that, Instagram, because that platform is also very widely used, and we have to, if we want to reach more and more people, so we used all the social platform as much as we can. So I don't think that it will take a lot time, but whenever any member is having any free time, I think we must add people and we must invite the people so that they can join and they can at least learn and give them some good insight out. So, and this industry is very wide open. What we know and what we are discussing is only the one part of the portion of our professional journey. And even I have spent so many years in career, I have left out to be learned many things. So I think everybody should put together one smart and, a punctual step to add more and more people in this group. Hello, all of you. I truly agree. Hello, Montu. I truly agree with Sinha. Yes. Yeah. Please continue. Adding to some suggestion for this, for Mr. Suneet, as he told, we should have a single group or a big group. So I suggest, can we have a Telegram group? Because in my past company, they have a Telegram group where you can add thousands of people in a single group, where you are managing, I think, different groups in WhatsApp. Better can we switch it to Telegram? So that will be a good suggestion. I mean, a single group that you can manage from Telegram. Okay, Nitin, point is noted. Now, can you please tell us from where you are joining and what is your exact background? I am Nitin Kharia, and I am currently working in Lixil Group. It's a sanitary ware company. Our product is American Standard and Grohe. Hope you heard about it. And basically, I belong to Madhya Pradesh, but just recently, last month, I shifted my job from Indore to now I am in West Godavari. Before that, I was in Roka Group. So basically, I am looking after all the procurement activity in plant, or you can say a procurement head and in this manufacturing unit. So great. And Nitinji, when you have exactly joined our group or our community? I joined in the month of September only, not before that.
So I So how is your experience? it is so far? yes it is good group, and every time I used to learn something, and although I suggest sometimes something which we can discuss over here in group, or something new, just like I last time I told you that can we have a discussion or learning about that reverse auction. Just before Sunit ji, Mr. Sriram has told that something new which can adopt, and is there any experienced person for that? Yes, I don't have any experience about this reverse auction, which I told you last time. Reverse auction is one of the best thing where you need not to do any further this negotiation kind of thing. That is inbuilt kind of thing in reverse auction. So I personally I want to know something more about this reverse auction. So is there any experienced person which he has gone through this process and is learning about this? So please share. I really want to know about this process. Nitin, this is Sunit again. Sure. Yes, sir. The reverse auctioning is applicable and is a very good option for negotiation, but it is not applicable everywhere. So I think Montu can arrange one session who knows this process very well, because I am from background which is moreover a construction, and I do have experience of IT, but we can find out a person who can give a very good knowledge sharing on this platform. But I believe reverse auction is not applicable for all the cases. There are few commodities where reverse auctioning doesn't give a lot of, it doesn't give a very good result. Okay. Hi Montu. Hi everyone. Hi Jay. Hi Jay, how are you? Yeah, this side Jay. So hi everyone. Yeah, Hope everyone is. I want to just reply on this reverse auctioning question. Hey Jay, sorry to interrupt you. No problem, Vivek. Please continue. I think I forget the name, the guy who has asked this question about the reverse auctioning. Nitin Khare. Nitin. Yeah, Nitin. Yeah. So reverse auctioning normally normally companies are doing for the scrap only, because you don't know about the supplier's background and much more in that, because it's two type of the Vivek, one thing, reverse auctioning is meant for cost reduction, and scrap is basically forward auctioning. Absolutely right. Right, sir, I agree. Okay, but I have done because in my last company we used to do this for packaging material, where specifically some drawing is defined, material is defined, everything is defined, so that vendor can evaluate the best price with minimum profit and can quote accordingly. So that reverse auction is working in packing material as well, where drawing and such specified specifications are mentioned. Okay, so it's a closed reverse auctioning or open reverse auctioning? It means like I have done for the just misunderstanding in that. So when you are doing the reverse auctioning, so there is a closed and open, correct? Where you can fix the price. This will be the price. So I think it's for scrap. It's a forward auctioning. Yes, correct. So where we can just tell the price. This will be the price. Apart from that, whoever is coming is a higher side bidder, we can give. I think it's a forward auctioning. Yeah. Right. This is Sudarshan here. This is Sudarshan here from Bangalore. Yes, I think I have quite a hands-on experience on e-auctions or reverse auctions. See, electronic auction has come up with four different types. One is reverse auction, English reverse auction, and second one is Dutch reverse auction. Third one is forward auction, and fourth one Japanese they use some kind of auction. So there are four types of e-auctions. And reverse auction, one of the person has said, it is not helpful in all the cases. Say in a single supplier or only two suppliers are there, in such cases and services, it won't help. It only help when there are standard products.
and when there are competitive products, and if it is a customized product or a OEM product, so it will not help. And reverse auction, yes, it is a there will be a time set, 15 to 20 minutes. The time set will be there. Within that time limit, the suppliers has to keep on reverse bidding. They will be they will see their ranking when they are bidding, but they don't see the price. Of course, we can make them see the price also. They keep on reducing, and finally, yeah, this is my best. Then below that, they don't go. So Sudarshan, sorry to hold you in between. So can you please tell us when you have joined our community and how is the experience so far? Yes, I joined 1.5 month back, 1.5 2 months back. Yeah, it's going good, and yes, I was also asked to deliver one seminar or one session, but I am busy as of now. I'll come back to you when myself available to. Most welcome. I think you can try hard to come on this platform as much as soon. You give your presentation or share your knowledge base. Montu is waiting for people like you. Very true. Yeah, definitely. That is the thing. I am also a kind of person who I want to share the information which I have. I had the procurement in Calzais. I think yes, this is my 4th session. I joined on the calls. Yeah, things are going well, and yes, it's a very right platform to make people who does not have updates or who need information to be learned. It's a very good platform to exchange their ideas or knowledge. So Sudarshan, we also have Manjunath in our procurement community. So I will approach to Manjunath and I will also approach to you. Collaboratively, let us deliver a session on SAP Ariba reverse auction and forward auction both. So when we have to purchase something, we need to apply reverse auction, and we need to sell something, then it will be applied forward auction, right? That's correct. Yeah. So for sure, we will have next session, or we will arrange a next session on SAP Ariba as well. Thank you so much. Thank you, Sudarshan, for joining us. Anybody else would like to share his or her perspective on this point? Hi Montu, and hi everyone. Jay this side again. Hi Jay, how are you? I'm doing good. So I think everybody is doing good. So I first of all, I introduced myself. I am joined from Delhi, and I am the part of this group since mid of April, and I'm really happy to be the part of this group. And the way we are like procurement wale are growing day by day, and the best thing, we are helping each other. It's the best thing and motivation for me to be the part of this group, and I want this procurement wallet to be like grow like anything and for that, whatever I can do, I will definitely do. This is commitment from my side, and I wish that commitment from everyone, so that we all will get more and more from this group. So my one viewpoint and my one suggestion, and even if I want input from other team members from over here, we are discussing to get more networking, more socialization, and grow this platform. And in every session we discuss to have more and more people to join, more to interact with each other, more and more sessions, more and more knowledge sharing with each other. So can we have, we had discussion to the Telegram or YouTube, Facebook page, Insta page, we had discussion in the morning, Brad in this session. So my one suggestion, can we have some e-platform or web portal? So what's the viewpoints of the team members on this? I think Google site, if you create a page website on Google using Google site, it is quite free, and we can customize it as per our requirement, as per our user base also. So
So that way, what we can do is also we can share email blast every person connected to procurement via emails also. So in that manner also we can help connect more people in our community. Good suggestion, Jai and Vedant. I think definitely if we will be having any web portal or website sort of thing, then it will be an added advantage for exchanging the information or building the network for growth as an individual or growth as an community as well. So what I will say, very good suggestion, Vedant and Jai. This is my suggestion. So if you can look out, or like in this groups we have the members, so how we can take this is forward. Please look into this. This is my suggestion. Okay, Jay, point is noted, and we will discuss this point while we are going to end of this session. So for 5 minutes, we will for sure discuss this point, and this is very necessary and valid point. So my second point is, as per floated agenda over e-platform or over LinkedIn or over our WhatsApp group. So my second point is, what is about job stipulation in the market. मार्केट में अभी जॉब्स का क्या रोल आउट चल रहा है, जॉब्स कैसी निकल रही हैं और जॉब क्या लोगों को मिल रही हैं अभी इस टाइम पे या नहीं, और मिल रही हैं तो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल रही हैं. आई वुड लाइक टू हैव योर इनसाइट गाइस. Montu, if I can, please. Kaushal, yeah, welcome and thanks for joining us. Thank you very much, Montu. Thank you very much everyone for being part of this buyer meet. Why I choose to spoke over this subject, because fortunately I recently joined my new organization. So I got an offer letter somewhere around 2.5 months back. So it was somewhere like in the month of August, and I joined in the month of September itself. So from the my experience, what I want to share over here with every procurement professional, that is, as on date, yes, market has started flourishing. Vacancies are coming even in OEM as well as ancillary companies or supplier companies. So scenario is not as similar as it was in during the COVID as well as in pre-COVID area. If you go through the Q1 of calendar year 2020, job scenario was also not so good, as well as in the last quarter of calendar year 2019, job scenario was not as bright as it used to be in regular days. And yes, COVID part has made this scenario quite worse, because people were not getting fresh jobs. Apart from it, during the COVID era, we have seen lots of people have lost their job as well. But now scenario has been changed. Plenty of sectors has started grooming, like e-commerce, IT sector, and due to good rain and good government policy, agriculture sector like farm equipment manufacturing or chemical and allied industries, they all have started growing very well. And yes, in the automobile and manufacturing industry, all the SIAM reports, Society of Indian Automotive Manufacturing, their reports are suggesting that manufacturers are getting growth of somewhere around 10 to 20% as compared to last calendar year in the same month. So job scenario and the business scenario has started improving. Yes, there are plenty of still sectors. There are plenty of sectors who are still waiting for the business to get normalized. But jobs are coming in the market at each and every level. From very beginners, from 2 to 5 years of experience till the senior most position of the company. But how this pandemic has affected the job selection criteria or job searching criteria is, previously there was a very less effect of networking of people. But as of now, jobs are getting published and people are getting selected through network and their personal and professional networking only. So what is more important as on date is networking for searching a job, for job recommendation, interview, and
Kaushal, am I audible to you? I think you are losing some network. Okay, no problem. So Kaushal ने जो कहा बिल्कुल एकदम ठीक है दोस्तों, because that is also one of the reason we are here. So as a procurement wale community, we are here almost more than 1,000 of numbers. 1,000 लोग अगर हैं, if we will help each other, like if somebody doesn't job any and he is facing some kind of problem, so why we cannot help to him or her? So this is a solid reason to make the community more stronger and stronger. And how we can do our community stronger? Let us share our web link of YouTube, of LinkedIn, and let us share across the world. So as Sunil Sinha ji and Kaushal mentioned, we need to share our community and we need to make bigger and bigger our community. So that is also a big benefit for all of us. Am I right? आप कुछ लोग अगर इस पे कहना चाहते हो तो प्लीज गो अहेड. मोंटू, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ. अगर आप देखो गौर से तो हम यहाँ के ऊपर कम्युनिटी को इनलार्ज करने की भी कोशिश कर रहे हैं. हम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि let other people will also join in this group to make a more and larger platform. Certainly जो हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक चैलेंज तो रहता ही है, लार्ज पीपल का इन्वॉल्व होना, और हर एक बंदे के पास अपना टाइम कंस्ट्रेंट तो है ही है. अगर मैं गौर से देखूं तो यहाँ पे लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. हेल्प कैसे कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग के थ्रू तो नॉन स्टॉप हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. और आई बिलीव एक दो लोगों की इस प्लेटफॉर्म पे जॉब भी लगी है जो मैं बराबर देख रहा हूँ. बट मेरा मानना है कि एक इनोवेशन थॉट प्रोसेस हमें रखना चाहिए कि हम किस तरीके से और चीजों को कोलैबोरेट करके आगे बढ़ें. इसमें मेरा इनोवेशन थॉट प्रोसेस ये है कि क्यों ना हम एक चीज ये सोचें कि हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो वो स्टार्टअप्स हैं जो बिल्कुल न्यूली फॉर्म्ड हैं, हम उनको वैलिडेट करें. स्टार्टअप मीन्स कि कोई भी डोमेन हो सकता है. इसमें बहुत सारे बंदे हैं, अलग अलग डोमेन के लोग हैं. कोई कंस्ट्रक्शन से है, कोई टेलीकॉम से है, कोई ऑटोमोबाइल से है. और उस स्टार्टअप को हम देखें कि हम कैसे ग्रो करा सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि हम उसको कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई फेवर करे. जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है, जो उस प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम उस स्टार्टअप को आगे बढ़ाएं. अब यहाँ मेरा विन विन सिचुएशन क्या है? अगर वो स्टार्टअप आगे बढ़ता है तो हम उससे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारे इस लार्ज प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई बंदा कभी ना कभी कैसे ना कैसे सिचुएशन में इफेक्टेड होगा. वो इफेक्टेड हो सकता है पेंडेमिक से, वो इफेक्टेड हो सकता है लोकेशन चेंज से, वो इफेक्टेड हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन जो है सेटल डाउन नहीं कर रही है और उसने ले ऑफ कर दिया. तो जो स्टार्टअप अगर ग्रो करेगा, तो अगर एक दो कैंडिडेट्स हैं, हमारा कोई बंदा अगर सफर कर रहा है किसी जॉब में, और अगर हमें लगता है कि वो स्टार्टअप के अंदर सेटल डाउन कर लेता है और उससे स्टार्टअप को भी बेनिफिट होगा, ही विल गेट अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन. डेफिनेटली हम लोग का रेफरेंस होगा तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बिकॉज जनरली क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हिकअप्स में रहती हैं कि बंदे कैसे ले. तो वो स्टार्टअप क्या होगा, वो म्यूचुअली हमें जानता होगा, हम उसको जानते होंगे, और अगर हम वहाँ के ऊपर उस कैंडिडेट को अगर हम आगे बढ़ाते हैं. ये बेसिकली पॉइंट मैं क्यों रेस कर रहा हूँ कि शायद अगर हम इसको एक्सपीरियंस करें और अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो डेफिनेटली हम बोथ साइड हेल्प कर रहे हैं. हम तो एक उन बंदों को हेल्प कर रहे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट में, हम एक उन बंदों को हेल्प कर रहे हैं जो बेचारे घर में बैठे हैं और जिनका कोई रोल नहीं है इस पूरी सिचुएशन का या एनवायरनमेंट का. तो मेरा मानना है कि एक इस चीज को भी अगर हम डिस्कस करें आगे कि हाउ वी शुड ग्रो अप, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा. सिन्हा साहब, आई बाय योर पॉइंट. दोनों लोग मतलब बी इट एम्प्लॉयर और बी इट एम्प्लॉई, सो all of us are suffering due to this pandemic situation, and needless to say we should support each other. And if we talk about startup or make in India concept, I truly agree with your point. So we as procurement community, we should support our Prime Minister's vision, which is local for vocal type and startup promotion. So fair point, and I would like to hear from our other procurement members what is their say.
Guys, please share your perspective or your suggestion on मेरा this एक point. बिलीव है इसके अंदर, अगर हम ये प्रोसेस को सेटअप कर ले जाएंगे, आई एम नॉट सेइंग कि हम किसी बंदे को आउट ऑफ द वे जाके हम किसी को हेल्प करें. मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि हम किसी और बंदे को यहाँ के ऊपर कोलैबोरेट करके आगे बढ़ाएं. मेरा एक ही पॉइंट है कि वी शुड फॉर्म ए 2 or 3 पीपल कमेटी और एक टीम बना के उस स्टार्टअप को वेरीफाई करें. वो स्टार्टअप है, अगर थोड़ा एस्टेब्लिश ब्रांड है, और देखिए किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं. बिकॉज इससे एक बेनिफिट तो जरूर है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर जो बंदे स्ट्रगल कर रहे हैं उनको शायद हम सेटल डाउन कर ले जाएंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा important है. थोड़ा सा रुकूंगा आपको. प्रणीत जी ने ज्वाइन किया है. प्रणीत जी, would you like to say something on this make in India or local for vocal concept? How we can promote or how we can help to make this vision possible? Yes, so good morning to everyone. Actually, first of all, I will just give my introduction. Thank you, Montu ji, for joining me in this group. एक आनंद जी को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा क्योंकि उनके वजह से मैं ये ग्रुप ज्वाइन कर पाया. Myself Pranit Sankhya, I am located in Pune, and before that I was working with Vari Energies company, which is located in Mumbai. तो अभी just हमारा ऑफिस मुंबई से सूरत शिफ्ट हुआ in Gujarat. So I did that job, and due to some pandemic situation, company has pressurized me to resign all those situations. So there was no any option because my wife is working in Pune. And difficult me to shift myself in Surat, and उसमें भी cost cutting not able to meet Praneet, sorry to say you are not audible properly. You are losing your voice. Hello. Hello. Montu ji, am I audible? Yes, you are audible, Mr. Tiwari. Montu, I just want to share one video. If you permit, can I share my screen? Okay. I think the Pranit is still continuing, but we are having some problem with his net. I think so. Sure. Just a moment. So, Puneet, here you go. You can share what you want to share with all of us. Let me know if you can see the video. Yes, visible. This is how the countries have evolved in last 50 years. We just see how the ranks are changing every year. It's a 3 minutes video, but you will see the real picture over here. So, Puneet, can you please tell us what is exactly it is about? This is about exporters, the countries who are exporting their products outside their country through this making country concept. So the more the product they are exporting, the more money they are making. Okay. So I will just fast forward it, looking at the team's time constraint over here. At the end of 2019, you will see China is ranked 1, followed by US, Germany, Japan, and Netherlands. So the purpose for sharing this video was, the main purpose of sharing this video was that these countries have already started the making country concept. What we as an Indian, what the Prime Minister is focusing on in Atmanirbhar India, they have already started maybe 40 to 50 years back. And what happened as a result, whatever products they are making in their country, they are exporting it outside their country, and the other countries are putting their money into that. So when we are thinking from the Indian point of view, what our PM is thinking of making India concept, we need to promote the startups. Because when the startup is getting promoted, they can make the raw materials which can be used in the country itself, and the money will flow within the country people instead of going outside.
today we are banning the Chinese products because whatever products we are buying from them, the money is going to their country, for which they are utilizing those money for their developments. But if we promote startups over here, we can utilize those money in our own country for the benefit of the people, for the benefit of the country. And this will also help us to improve the job openings. It can be improved, it can be used within our community, it can be used in other community. We can help develop other people as well with the help of this Make in India concept. Now the question is how to do it. Punit, hello. Can you hear me? Yes, Yes, Vinod, you are here. audible. Yeah. See, the problem is, there are two things. Okay, with exports particularly, I would like to contribute. With exports, there is first thing is government framework and policy. Okay, you can go right now. See, if you say China, what they have done, if you go through their history, their economic zones, first they were surrounded about Hong Kong, a shipping port. They started with Hong Kong. Now they have built entire cities and export policies, which makes it very easy to export to other countries. Like suppose in India, even bigger manufacturers export, like car, as you see, car exports and everything. But when it comes to the smaller one, like a medium enterprise or a startup, as you say, so one thing is scale of concept, like how whatever product, if you are making in large numbers, the cost will come down. So that the Chinese export work on this philosophy. Whatever they make so much, so economics of scale, reduces the price of every item. And price is, whatever, if you make in India or outside or China or Bangladesh, wherever it is, if as per a company's financial perspective, who's a buyer, he will even see trade war is going between US and China, but still China is biggest exporter to US. Simple reason is the cost. And if really government of India wants to ease the process of export, then you should see the documentation we do in export. Okay, sometimes you will, if you go and realize, it is very difficult to go through that export process. If you want to send one product, let's say you want to send 3-4 containers, so India mein wo hisab hai ki jugaad wala hisab hai. It's not very easy go through for MSME or SME because of the laws and long process. So it's mostly startups kya karte hain, startups ye karte hain ki bhai India mein jo kaam hai wo kar lo. They know, everybody knows ki export mein paisa hai, because once the exchange rates come out, I'll give you an example of this business called dropship. Like as many people might know here, dropship is a growing business. What people do, they will make a store of Indian products or Chinese products. They can make a website and they can publish on web, and they will market it in US via Instagram, Facebook, whatever. So the basic problem what we have right now in India is the government is saying, yes, we want to do, you should do local, you should do this, but on the ground, if the framework is not as good, the smoothness is not there. So companies will hesitate to put their money where so exploration of different country market is very difficult until unless you have smooth operations on ground, not on the paper. So that is one I would say red tape challenge or something, you can say like that. And second thing of one more point, like Praful highlighted, of hiring. So what we can do is we can, like top consultancies in India, let's say whatever you can name, couple of Randstad is there, some of there. So what we can do is, as everybody gets call, daily basis ki, this is the opening and this is so and so. So what we can do is, from one company, one big HR company, we can make 5 and take one guy's contact. And then what we can do is, if we can tell them, if you want to hire any procurement guy, you can approach us directly. So in that sense, if they are looking for a procurement guy, so they can single point of contact, and they can give to us, like, this is the opening, we are looking for this location. And those consultancies, as right now they have a bigger network than us, so what they will do is, if they tell us we are looking for a procurement guy from this location, this job profile and that, so there we can contribute, and our credibility will increase if we are giving good guys. Plus one more thing we have to, in the sense of procurement, what we need to do, we need to start verifying traders and manufacturers. Because see, as of now, we all are in procurement and we buy stuff for companies. So our best work
best thing is that we have to decide a price which is best for our company, our organization, as well as the quality. And the concept with manufacturing and tradership is ki, only 10% of people are manufacturers, because it takes a whole lot of setup, crores of investment and everything. And then there is a middleman. So what we need to do is we need to make a manufacturer's approach concept, and then if any need is coming, then we should know that manufacturer. Because what happens is, if sometimes that attitude goes like, company is paying, मेरा क्या जा रहा है, तो trader दे रहा है और company को rate okay है, तो I will go with that rate. So in that sense, if we can contribute more, we can approach the manufacturers, as so many people are working in manufacturing companies itself. Suppose अभी कोई cement में यहाँ procurement कर रहा है, suppose bags or something like that, but his company is also manufacturing cement. And then because every procurement is either a waste being product or raw material, and any person who's working with raw material right now should be making a product which is going to the market, and there might be a very good chance that some other guys some other guys is procuring the same material, but not directly, but through a trader. So in that sense also we can connect two people, one within our group only, the one who's manufacturing and one who's buying. So in that sense we can cut this thing, and he can give a good rate for this company, and that guy also can get a sale for his company. So in that sense also we can collaborate, and once that cycle is involved, if two parties get beneficial, win-win for both people, then the credibility will go very, it's all about credibility. When it goes up, then people will start approaching you automatically. So that is the thing. And as per exports, let's say I'll give you an example. For handicrafts, India is the largest exporter for handicrafts, because it cannot be made by a machine. It's very artistic. So in exports, the problem is the government needs to push more reforms or make it very easy. It should be easy like sending a DTDC courier. But some companies do it. But when you go to a larger scale clearance from Mumbai port and documentation, forward documentation, then reverse documentation, plus import tax, export tax. So it's very complicated to push your products through, because that's why exporters earn money. Because you don't know the process, because process is so big. It's like making a driving license through a RTO, which is very difficult. So you directly pay a person, middleman, and get your license or something done immediately. So in that sense we need to improve a lot. So that's my point. Appreciable, sir. Vinod sir, really good insight. So Vinod, thanks for joining us. आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, अपने बारे में थोड़ा बताएंगे, और आपका एक्सपीरियंस सो फार कब तक रहा है हमारे प्रोक्यूरमेंट कम्युनिटी? मेरे को अभी तो 4 महीने हो गए. मैं ज्वाइन कर रहा हूँ बैंगलोर से. अर्लियर आई हैव वर्कड विद ITC in sense of raw material and packaging material procurement, and Grofers, and there was a startup called Tea Express. They were into high quality, high end tea. And right now I'm with Flipkart with the planning team. So thank you, Vinod, and it's our pleasure to have you in our community. Welcome. Vinod, Vivek here. I just want to add one thing. Now the process is day by day or year on year is just smoothing for the export, because I've seen a lot of MSME supplier in the Gujarat, and they are exporting. Sir, I'll tell you about Gujarat. No, Gujarat, the thing is, see, Gujarat and Gujarati and Marwadi people, they have a network. If you go to Ahmedabad, I'll suggest you visit Ahmedabad and see how they operate. So they have very close community networks. So I know a manufacturer, I know exporter, and both are friends. Okay. So what I can do is I can tell him to export my products on my behalf, and he'll do with less commission. So it's more about network. Maximum exporters are from Gujarat. If you look into that, the government policy, I think earlier I have used EPCG license, which is promoting for the capital import. So schemes are there from the government side. Absolutely. नहीं sir. Schemes. So I think मुझे हिसाब से पहले क्या था विनोद, किसको हवा बना रखा था, मतलब export import. वो तो है. If you are looking into that in the deep, ना, it's not too much difficult. Even as a buyer can do the export import, जो company के लिए कर सकता है.
बट नाउ द कंपनी इज कीपिंग ए सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर दैट, और उसको थोड़ा सा और ज्यादा हुआ बना के रखा था. बट आई डोंट थिंक सो कि अभी लिटिल बिट इम्प्रूव हो रहा है. हाँ, कंपेयर टू चाइना और अदर्स कंट्री वी कैन से कि हाँ बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का. बट देयर इज अ स्कोप, मतलब स्लोली गवर्नमेंट भी इम्प्रूव कर रही है. दे नो कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा. दैट इज करेक्ट. विवेक जी, इसमें क्या है ना, दो चीजें हैं. एक तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट क्या है कि अगर आप जैसे और एक और चीज है कि इसमें लोगों को डर ज्यादा है, पेमेंट ट्रांजैक्शन को लेके. एक तो ये भी पॉइंट है कि अगर मान लीजिए मैंने एक्सपोर्ट किया और मेरा पैसा फंस गया, अब बिग मैन्युफैक्चरर कैन गो लीगल एंड डू ऑल दोस थिंग्स. बट अभी छोटा सप्लायर है तो वो क्या करेगा, वो जो बंदा भेज रहा है, बिकॉज उसको चाहिए कैश. एवरी स्मॉल गाय विल से कि भैया मेरा माल ले लो, मेरे को कम प्रॉफिट में ही दे दो. तो अभी वही होता है ना एक्सपोर्ट में, बिकॉज आई नो की वैल्यू ऑफ समथिंग, सपोज गणेश स्टैचू मेड ऑफ वुड, हैंड वर्क is 1,000 rupees in India. If I go sell that same on US or Europe or something somewhere, it will be easily go for $800 or $1,000, right? तो मैं उसको 1,000 रुपए का लेके 15,000 16,000 का बेच रहा हूँ. लेकिन वो जो बंदा बना रहा है ना, उसको हेडेक नहीं चाहिए. प्रॉब्लम यही आ जाता है. अब हेडेक वाला हिसाब ही हो जाता है कि ही इंपॉर्टेंट रोल है. लेट्स से विनोद, जैसे आई हैव सीन कि मैंने बहुत सारे मीडिएटर्स देखे हैं जो गुजरात से और मतलब राजस्थान से अदर लोकेशन से चाइना में शिफ्ट हो गए हैं, एंड दे आर जस्ट डूइंग द ट्रेडिंग. मतलब उनका काम ये है कि यहाँ से कुछ इंपोर्ट करना है और वहां से कुछ एक्सपोर्ट करना है. तो दे विल इंश्योर कि जो मटेरियल आ रहा है प्रॉपर. यू नो वेरी वेल टू द चाइनीज, अगर आपने किसी को भी ना, आपको जो मटेरियल आएगा वो पता ही नहीं है आपने क्या ऑर्डर किया था और क्या मटेरियल आ रहा है आपको. तो यहाँ पर वो जो मीडिएटर्स रहते हैं ना, दे आर प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिटवीन. नहीं, एब्सोल्युटली रोल नहीं, आई एम नॉट चैलेंजिंग द रोल, बिकॉज क्यूसी तो कोई कर नहीं सकता. Nobody can, अगर मेरे पास बजट नहीं है and I want to, suppose I want to buy 1,000 mugs of handmade mugs from China and मैं पेमेंट कर दूं अलीबाबा पे, तो एक तो ये है कि चलो वेबसाइट का क्रेडिबिलिटी है या मैंने सेलर रेटिंग देख के कर लिया. बट प्रॉब्लम ये है कि अगर वो खराब आ गया है, डैमेज हो गया, तो फिर टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के उसमें जाके फिर फाइट करके, इट विल बी वेरी मतलब नॉन वर्दी एंड वेरी लॉन्ग. करेक्ट. इवन एक और इसमें ऐड करना चाहूंगा विनोद, अगर एक्सपोर्टिंग अगर हमें इंडिया को बढ़ाना है तो वी नीड टू बी मोर फोकस ऑन दैट द ऑटोमेशन. स्टिल मतलब हम अगर आई एम फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स कंपनी, ओके, सो a lot of scope for the automation. आज भी हम सेम प्रोसेस में लगे हुए हैं. हम बहुत we are not using the और आज भी मतलब सिंपल ऑटोमेशन है जहाँ पर पिक एंड प्लेस ऑटोमेशन करना है आपको. जो आप चाइना में जाके देखोगे, आई हैव विजिटेड चाइना 2-3 times, सो आई हैव सीन ए लॉट ऑफ कंपनी इन द चाइना. मेरे टूल सप्लायर्स चाइना के हैं एंड वी आर टेकिंग लॉट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द चाइना. तो छोटी छोटी कंपनियों ने भी इतना ऑटोमेशन कर रखा है ना वहां पर, मतलब वहां पर एक्चुअली क्या है कि मेरे को क्या लगता है उसका रीजन क्या है, एक जैसे उसका एक वर्क कल्चर बन जाता है. अभी सपोज आप एक सिटी में काम कर रहे हैं, आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और आप दूसरे अपने साथी को जाके देखते हैं कि यार ही इज डूइंग दिस थिंग, तो आप जाके पूछेंगे. अभी इंडिया में क्या है, जब ऑटोमेशन की बात आती है तो आपको स्किल्ड लेबर भी चाहिए, ठीक है, और आपको वो जानने के लिए चाहिए भी कि मैं किससे करूं. जैसे सिंपल मैं बताता हूँ, RFID वाला चीज है, पिक एंड स्कैन. यू पिक समथिंग, यू डू RFID स्कैन और उसके बाद आगे बढ़ा दिया. जनरली जो वेयर हाउसेज में होता है या मूवमेंट में होता है. तो अपने यहाँ जो MSMEs हैं उनको क्या है, दे वर्क ऑन ऑर्डर बेसिस. उनको क्या ऑर्डर आएगा, जो स्मॉल स्केल की बात कर रहा हूँ. लार्ज स्केल तो ऑटोमेशन एनीबडी कैन डू क्योंकि दे हैव बजट. अभी घूम फिर के या तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस smaller people or smaller MSMEs to automation in the sense कि भाई this is a very easy and very, because ERP system, suppose अगर हम ERP की भी बात करें तो ERP कितने लोग यूज करते हैं, SAP और you can name Oracle ERP और any ERP like MSME scale पे या low scale पे जो भी manufacturers हैं वो ERP नहीं यूज करते. they are still using pen and paper, and simple reason is कि उनका जो cost effectiveness है वो नहीं afford कर सकते. Even SAP license, so many startups I know, I worked with Rapido, they didn't buy SAP license even they had money because it was not in interest of that business. Even though it will increase it, but it will not justify that price जो आप SAP license के लिए pay करेंगे for that company.
तो for time इसमें being. अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग दैट इज ओके, दैट इज फॉर द प्रोसेस इंप्रूवमेंट जो आप सेफ के लिए कर रहे हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग में जो ऑटोमेशन अभी देखा है मैंने इंडिया में, स्लोली लो कॉस्ट ऑटोमेशन इंप्रूव हो रहा है, मतलब लॉट हाँ, ऑफ absolutely, slowly, टियर वन थोड़ा थोड़ा तो हो रहा सप्लायर्स है. हैं एंड दे आर आल्सो थिंकिंग ऑन दैट। अगर उनका आप देखते हैं तो आरओआई निकालते हैं अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो, तो अगर इट्स क्लोज टू 2 to 3 years तो दे आर फोकसिंग ऑन दैट कि हाँ हमें ऑटोमेशन करना चाहिए वहाँ पर, and they are improving a lot in terms of the quality or in terms of the quality. हाँ, So तो Vivek, जी इसमें Vivek and Vinod, thanks for healthy communication. And what we are discussing, we have lot of or our MSME and startup are facing a lot of challenges in terms of digitization or considering current pandemic situation. So being a procurement professional in a procurement wale community, by procurement wale community, how and what we can contribute in Make in India campaign, which is driven by our government, or can we do something creative for our India? So I want to hear from you guys if we are really feeling that we can do something creative over this platform. Thank you so much. Please share your perspective on this. One thing which we can do is what I feel is like smaller. See, there are two things to grow a business. Okay, either you make entire network on your own, or you collaborate with someone who already has a network. Let's say a very good example is Flipkart, Snapdeal, and those things. Okay, like Udaan. So what these startups do, they act as a trader. And there are so many startups which are coming with, in the sense of export also. What if you have a material, you have a demand from somewhere, they will arrange export for you. And they are very quotation based. If you gave them requirement today, they are very. So one connect is that what we can do is we can, tell these people to get on board on the e-commerce website across the world. I'm not saying India only. They can go to, Amazon.com, Amazon.in, Amazon.ca, Canada, wherever we want to export. So that is one way, because those companies already have infrastructure, and that small supplier has to do a little. He has to just give that product to the guy. That's it. That's his transaction is. That's all it is. Print a receipt and give the product to guy, and then entire supply chain and customer delivery will be taken care by Amazon or Flipkart or whatever eStay or whatever website he's on. So there is one way, because if he cannot develop technology in a rapid time or a short duration of time, he can at least get an assistance from these companies, in the sense because it will increase the profit for them, and it will slowly once he get money, he gets he starts to earn more money, then he can introduce more automation on his own end. So there is one way to say it, already existing system which has been created by other companies, he can use it for a very small amount, or a margin, you can say 10%, 15%, whatever is agreed on. I've seen so many exporters who are exporting on Alibaba itself. They are Indian, but they are exporting to China. So what they do is so maximum what we can do is make a list of these websites, and populate it, and with the entire process. This is the this is the onboarding process. This is the documents which are required, and we can get them onboarded so they can push their products in all these platforms. At least not all, then 2-3 platforms, and he can see slowly work it out. So he will also know how these things works, and then he will increase his profit. So that is one immediate solution what I can think of. Second thing is, yes, manpower and process training, everything on his own end has to start. Plus, most important thing is the network, because these websites, B2B websites, can give you a bunch of customers, but most importantly you have to get a network to get more orders, to increase your profit, because ultimately it's end is about sell. All the companies working towards sell, either procurement, operation, function, everything is based on one thing, that is selling the product or service. So that is one solution I can think of right now. Later on, if I have something on mind, I'll share. Hey Vinod, can you share? Montu, can we arrange one session if Vinod is agreed to give a session on that? Maybe. Yes, I think so. Yeah, onboarding thing I can share with anybody, or any manufacturers, plastic or MSME small manufacturers. Onboarding we can show.
documents, everybody has documents right now, the GST and PAN card, Aadhaar card, bank details, everybody has. So what we can do is I can, and even it is very easy, but people don't approach it. But still, if somebody needs some help, we can act as a catalyst to them. We can help them, onboard on these websites. And once they onboard, they can, at least, get a photograph or get their product listed and then advertise and, ultimately sell it. Fantastic, Vinod. Can you please ping me your contact number? Post this session, I will in touch with you. Okay, done. And thanks for insight and thanks for joining us also. So anybody else would like to throw some light on this idea? I think we, as a group of the buyer, we also need to be support any startup is coming, and any team members from our team if started their own business or small scale unit. So we need to be support being a buyer, and you have to be behave as per your company policy. This is Sunit. I'm sorry I'm stopping you. This is a very sensitive discussion. I think we must make a plan that how we should support them. My intention of raising this point is limited to only the job scenario. So I think that's why I said, Montu, that we should form a 2 or 3 people committee and we should analyze so that, there should not be any personalized favor should come in between us. And I believe we all are the, hardcore professional, and we are in a profession where thousands of eyes watching to us. So correct. I think we should form a committee, and the committee in terms of we should discuss and we should elaborate and we should understand how we should go ahead. But intention is very clear. We will support them, and in reverse, we will take a manpower adjustment well within this group, whomsoever is struggling. The struggle can be any XYZ. So, the person will get a platform to settle down his own, business, as well as we will also have a gain from settling our own community member, so that he should run his family happily. So this is my objective of raising this question. Sunitji, one point I would like to add in this. If we can, if somebody knows in a higher level, in the sense of like these hiring consultancies like Randstad, or similar or similar, which are big names in HR consultancy. So what we can do is we can take their phone numbers, any 1 or 2 or 3 person, and we can we can get them we have so many procurement guys. So if you have any opening for procurement, you can directly approach us. We will share the profiles. So in some kind of that arrangement, because see, they have a need. Okay, they always have a need, and they have much better connect with corporates than us, because they are working in this domain for a long time. So what we can do is if we get the need from our end, then we can continuously push those buyers to those people to share the profiles. So in that sense, we can get the people who are struggling for job also, and we can build a credibility also. So if some procurement opening comes, they will directly ping us in the group, or whoever the SPOC is, ki bhai, this is the opening, we are looking for this much candidate. We can post the same in the group, and then directly we can share the profile of couple of people whoever are interested. I think my intention of raising this point, and also मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ. देखो, Montu has created a platform that to be very wonderful platform. Let's collaborate each other, find out the means and ways, and to grow this. He has given a platform. Now everything cannot done by Montu. We as a team should form a nature of understanding, as well as find out some time that when we should grow this, that should be professionally okay, acceptable. जैसे आपने बोला कि HR के बंदों को लेके आते हैं, आई थिंक ये बहुत अच्छा आइडिया है जो मेरे दिमाग में क्लिक नहीं किया था. मेरे दिमाग में तो एक ही चीज क्लिक करी थी कि हम अगर किसी उन सब बंदों को स्टार्टअप को स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली क्या है कि वो भी ग्रो करेंगे, और वहां पे भी हमें एक तरह से विंडो मिल जाएगी अपने किसी बंदे को सेटल डाउन करने के लिए. अब इसके अंदर भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि हम कैसे स्टार्टअप को हेल्प करेंगे, उसका भी हमें एक प्रोसेस डिफाइन करना पड़ेगा आप सब लोगों की हेल्प पे. Agreed. Hey Vinod, I have connected with the Naukri and Randstad because I approached for my own company. क्योंकि हम भी कुछ hire करते हैं, तो I have placed the order. Let me check with them if they are interested. I'll check and. हाँ please ना, देखो उन लोगों को तो क्या है, उन लोगों को तो कैंडिडेट खुद ढूंढना पड़ता है, कॉल करके, कोल्ड कॉलिंग करके. तो इट इज बेटर फॉर देम, उनको तो अगर इंस्टेंटली मिल रहा है कोई कैंडिडेट. प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन शेयरिंग का है.
अगर नौकरी या रैंडस्टैंड इज लुकिंग फॉर अ प्रोक्योरमेंट गाय एंड वी डोंट नो इट, देन देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप। तो अगर वहां पे हम लोग फिल इन कर सकते हैं वो उनके पोर्टल से ही जाते हैं, बट फिर भी मैं उनसे एक बार बात करके चेक करता हूँ कि ऐसा कोई स्कोप है क्या। नहीं, कई बार क्या होता है पोर्टल से जाता है तो पोर्टल पे जाने से पहले इफ दे अप्रोच अस और उनको तुरंत मिल जाए तो व्हाई दे विल गो टू द पोर्टल, बिकॉज पोर्टल में भी आपको पे करना ही पड़ेगा, राइट? इफ वी कैन गिव 5-8 profiles directly to them for suppose a procurement opening somewhere, we can give from our group 3-4 profiles to them, then they can at least it will stick to their mind कि हाँ भाई ये प्रोफाइल आया है तो इसको देख सकते हैं एक बार। I'll discuss with them and update in a group maybe in the next meeting. I'll try my best. Sure. मतलब आई थिंक तीन ही चार बंदे बोल रहे हैं, लेट्स जो बंदे बोल नहीं पा रहे हैं, इफ दे कैन गिव अस देयर कंसेंट थ्रू चैट आल्सो, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग डिसीजन। आई so my dear participant, can you please at least ping us or SMS or text in chat box so that we can also think, are we going into right direction, or are you with us on this suggestion or on this creative idea? Please at least text at in chat box right away. Thank you. So Pradeep is saying I agree. ऐड करना चाहूंगा, एक ऐसा जो सिचुएशन है कि देखो नौकरी जब हम बायर्स को चाहिए तो जो हमारा हायरिंग करने वाला है वो एचआर के भी पहले वो पर्सन है जो सीनियर पोजीशन में है वो कंपनी में, मींस प्रोक्योरमेंट हेड और सप्लाई चेन हेड। सो अभी हमारे साथ में ऑलमोस्ट 1000 पीपल्स है, तो अगर हम हमारी कंपनीज के ही हमारे कलीग्स या कुछ सीनियर मेंबर्स को हमारे ग्रुप में हमारी कम्युनिटी में ऐड करें तो इससे क्या होगा कि कहीं पे भी किसी को भी रिक्वायरमेंट होगी, एनी कंपनी को दूसरे बायर की रिक्वायरमेंट होगी, ऑन स्पॉट विदाउट गोइंग टू कंसल्टेंसी थ्रू डायरेक्टली रूट हो जाएगा कि हाँ ये कंपनी में ये बंदे की रिक्वायरमेंट है, मैं डायरेक्टली इसको अप्रोच कर सकता हूँ। मीन्स अगर हम ज्यादा कलीग्स हमारे और ऐड करें सो वो भी एक एडेड पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए। यस वेदांत, अगर आप देखो ना अभी स्टार्ट डिस्कशन में आई थिंक जेंटलमैन कौशल ने एक बात बोली थी कि जॉब तो मिल रही है बट वो रेफरेंस के थ्रू मिल रही है, बिकॉज पीपल राइट नाउ इन पैंडेमिक कंडीशंस आई बिलीव दे आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क गोइंग थ्रू अदर पोर्टल्स। तो रेफरेंस जो है वो इस टाइम बहुत मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव रोल है। तो आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, मतलब 100% वैलिड है कि हम अगर इस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो डेफिनेटली हमें गेन होगा। हेलो, क्योंकि एंड ऑफ द डे हायरिंग हमारा मैनेजर ही करने वाला है, मींस ये लोग सिर्फ सजेस्ट करेंगे कि ये पर्संस है, लेकिन अगर वो ही लोग हमारे साथ हमारी कम्युनिटी में एडेड रहेंगे तो वो भी देख पाएंगे कि कम्युनिटी में क्या हो रहा है और इनसे कुछ हमें मिल सकेगा। मींस यहाँ से बंदे अगर हम चूज करें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा डिसाइड गोइंग फ्रॉम अ लॉन्गर रूट। यस, so Praneet am I audible? from Hello? our community is joining us. Yes, you are audible, Praneet. Acha, hi Montu sir, actually pandemic situation, job related, so I just wanted to say कि I just lost my job in August. So जो अभी जो सर का डिस्कशन चालू था regarding the job, actually नौकरी पे अप्लाई करने के बावजूद भी वहाँ पे we are trying to click on I am interesting almost मैंने 50-60 जॉब पे मेरा इंटरेस्ट शो किया, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग एनी सिंगल कॉल फ्रॉम कंपनी फॉर एन इंटरव्यू। तो मेरे ख्याल से नाउ दिस पैंडेमिक सिचुएशन पीपल्स आर गोइंग थ्रू ओनली रेफरेंस, नौकरी के थ्रू कुछ लिंक नहीं हो रहा है सर। सो समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या वीक पॉइंट्स है। एंड I just got call from 2-3 companies which is from automobile sector. तो वहाँ पे उनको यानी कैंडिडेट चाहिए स्पेशली फ्रॉम बी बैकग्राउंड। सो पीपल लाइक मी जो एक मैनेजमेंट बैकग्राउंड से है एंड हु इज सर्विंग 10 years एक्सपीरियंस इन प्रोक्योरमेंट।
तो वो सिचुएशन में वो बंदा क्या करे कि अगर उसका बी बैकग्राउंड नहीं है तो कंपनी आर लुकिंग फॉर अ टेक्निकल पर्सन, सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि इंजीनियरिंग है क्या, देन यू हैव रॉ मटेरियल नॉलेज, so what exactly procurement person have to do in this condition? Because as per my knowledge, procurement mein we have to deal with the vendor, get 3 quotations, price, and then the commercial process की payment terms क्या है क्या नहीं. So ये एक procurement का एक basic process है, but technically कितना knowledge gain करना चाहिए? Nishant here, Montu. Yes, hi Am I Nishant. audible? Yes, you are audible. Actually, I totally agreed with Pranit because I am also facing the same issue from last 3-4 months. Actually, currently I am not working. Okay, I applied in a lot of vacancies in LinkedIn, Naukri, Indeed, everything, but I'm also not getting the call. Okay. But sometimes what happens, if someone post a job in LinkedIn, like some people he posted in our company, some HR posting in our company, this type of requirement is there, so you can directly send resume to HR mail ID. Okay, so it is a better way to get direct contact with HR. But if you apply on any post, so it will be very difficult to reach up to HR and you get the call. It is I think my approach. I would like to suggest the solution for this, means not a solution, one probable issue. What you can do is you can just connect to the concerned people in that company via LinkedIn only. Try to understand what position they are trying, looking for a person, and connect them through LinkedIn. And when you are trying to send a resume, don't send a generic one. Try to address the solution that they are looking, or try to explain the profile that they are trying to look. If what happens normally is people send generic resumes all the time. Standard format is there and they send. If you design a resume for a different company in a different manner, that will help you receive call more than neglecting. So Yeah, that can Vedant, be. I agreed with your point, but कैसा होता है कि समटाइम अब अगर जानते भी है कि कौन हायरिंग मैनेजर है जो ये वैकेंसी पोस्ट किया, अगर आप उसको कांटेक्ट करना चाहेंगे. मैं बस एक ही चीज ऐड करूंगा निशा, एक चीज अंडरस्टैंड करो आप, ये पैंडेमिक में इससे पहले एक नॉर्मल सिचुएशन थी, अभी जो है सिचुएशन नॉर्मल नहीं है. मतलब मार्केट के अंदर बहुत सारे बंदे जॉब को ढूंढ रहे हैं, तो जो रिक्रूटर्स हैं उनके पास भी नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस बहुत ह्यूज है. अगर आप आज की डेट में देखो, एक लिंक्डइन की कोई जॉब निकलती है तो मतलब मैं अगर गलत नहीं हूं तो उसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ पीपल रिप्लाई करते हैं इमीडिएटली. करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट. एवरीबॉडी, कुछ लोग तो एक्चुअल जॉब नहीं है जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लोग के पास जॉब चेंज करना चाहते हैं ड्यू टू एनी XYZ रीजन, फियर ऑफ माइंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो आई बिलीव कि रिक्रूटर के पास भी ना इतना टाइम नहीं होता. अगर किसी बंदे को एक बंदा हायर करना है तो, और उसके पास ऐसे सपोज कर लीजिए अप्रोक्सीमेटली 100 जॉब निकलती है और 10,000 पीपल अगर अप्लाई करते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये बहुत मुश्किल है रिक्रूटर को कि हर एक बंदे की प्रोफाइल पढ़ के उसको रिस्पॉन्स करना. तो वो क्या करता है, वो अपना माइंडसेट देख के वो बंदों को सेलेक्ट करता है जिनको वो जानता है या जिनका उनके पास क्लोज रेफरेंस आया हुआ होता है. अब कभी कभी हम उस ब्रैकेट में फिट हो जाते हैं, कभी कभी 3-4-5-6 महीने लग जाते हैं तो हम उस ब्रैकेट में फिट नहीं होते हैं. तो आई बिलीव आप ट्राई करते रहो, डोंट लूज योर एनर्जी. सुनीत सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं. जैसे विनोद जी ने बताया ना कि सॉरी टू होल्ड यू निशांत. So Sinha sahab, Nishant and rest of participant, I would like to only one point of view here. यार डिपेंड करता है कि हम अपने इस कम्युनिटी को, अपने इस ग्रुप को कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं, राइट? क्या हम केवल यहाँ पे जॉब हमें कहीं से मिली SMS के थ्रू या WhatsApp के थ्रू, क्या हम ओनली इसको शेयर करना चाहते हैं, या फिर हम
as a human being, as a being a procurement professional, can we help each other? या फिर just मैं मोंटू बीच में आपको इसलिए रोक रहा हूँ. देखिए यहाँ पे thousands बंदे हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है. उस thousands बंदे में हम एक दूसरे, कितने बंदे एक दूसरे को जानते हैं? Not more than 20, 10, 15, 20. तो क्या है कि अगर आप लिंक्डइन पे जाते हो और ये देखते हो कि यार हमारा कोई नियर एंड डियर उससे कनेक्ट. सिन्हा साहब, that is the reason we are here. We are यही scheduling और arranging this लोग, buyers. जब तक लोग स्पीक आउट नहीं होंगे, अपनी स्क्रीन पे आके अपनी फेस नहीं दिखाएंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को मैसेज नहीं डालेंगे, तो नेम कंटेंट उसका स्ट्राइक नहीं करेगा माइंड के अंदर. तो जैसे ही उसको पता होगा कि यार मैं इस कुलीग को जानता हूँ, इस लिंक्डइन के ऊपर ये इनसे कनेक्टेड है, वी शुड कनेक्ट विद दिस कुलीग. ये एक प्रोसेस है. इस प्रोसेस के अंदर क्या है कि लोगों को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, लोगों को मतलब स्पीक आउट करना ही पड़ेगा. वो स्पीक आउट का कोई भी तरीका हो सकता है. हेलो. यस प्रणीत. सुनीत सर, एज यू सेड, मैंने अभी जस्ट मेरा वीडियो ऑन किया. अच्छा सर, आई जस्ट वांटेड टू प्रणीत, सॉरी टू होल्ड यू. सो ये जो अभी सिन्हा साहब ने कहा है ना, बहुत ही अच्छा आइडिया है. क्या हम केवल व्हाट्सएप पे चैट करना चाहते हैं, वो एक चैटिंग मैसेंजर बनाना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी को, या फिर हम फेस टू फेस कनेक्ट हो सकते हैं? राइट. और उस कनेक्शन का हम एक दूसरे को क्या बेनिफिट कर सकते हैं? एंड थैंक यू निशांत. सिन्हा साहब, यू आर डूइंग लाइक मैजिक. देखो 4 लोगों ने ना अपनी स्क्रीन ऑन कर ली. तो मैं ये कहना चाहता हूँ यार कि हम जब इतने सारे लोग कनेक्ट हो चुके हैं और इस मुकाम पे आ चुके हैं, तो क्यों ना कुछ हटके या कुछ अदर प्रोक्योरमेंट कम्युनिटी पे या व्हाट्सएप पे होता है तो अलग करें यार. अलग इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रहा कि हम कुछ रॉकेट साइंस टाइप का करें, बट एक जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो क्यों नहीं हम कर सकते यार? तो प्लीज लेट अस फ्लोट दिस आइडिया. मैं बताता हूँ. देखो, आप अगर गौर से देखो तो सेल्स पर्सन और प्रोक्योरमेंट पर्सन में एक डिफरेंस होता है. सेल्स पर्सन क्या भीड़ में दिखता रहता है और प्रोक्योरमेंट पर्सन भीड़ में नहीं दिखता है. और ये फंडामेंटल डिफरेंस है. मैं अगर आप देखो, मैं तुमसे अप्रैल से कनेक्टेड हूं और अप्रैल से एक बात बोल रहा हूं, लेट इट बी कनेक्टेड. क्या बोलने में प्रॉब्लम है? मतलब हु इज स्टॉपिंग अस? ये मैंने भी सीखा है. किसी ने मुझे भी फोर्स किया, तुम बोलो, तुम बोलते नहीं हो. और ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन मेरे 18th ईयर ऑफ करियर में आए हैं. मैं फिर बोलना शुरू कर दिया, आप लोग बोलते तुम कम बोलो. भाई यू नो, इस अवर रिक्वायरमेंट. द मोर वी सेल द मोर वी ग्रो. सेम चीज है, द मोर वी कनेक्ट द मोर वी ग्रो. तो मेरा इंटेंशन ये है कि वी शुड इन्वेस्ट सम टाइम. कितना टाइम लगेगा? आई थिंक 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा लिंक्डइन पे जाने पे, एक दूसरे से कनेक्ट होने पे. मॉर्निंग में कोई एक ऐसा इनोवेशन एक दूसरे को, मैं कह रहा हूँ वीक में एक दिन डाल दो, एक दूसरे से कनेक्ट हो लो. इट्स गुड. आपकी कोई थॉट प्रोसेस शेयर करो तो लोग आपका ना आपको पहचानेंगे. अब जैसे मेरा नेम जरूर लोग जानते होंगे इस टाइम, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप बोलता हूँ. मैं 1-2 सेशन छोड़ के नॉन स्टॉप बोलता हूँ. मोंटू की शक्ल जान गए. मैं भी शक्ल अपनी डेलिबरेटली दिखाता हूँ कि शायद वो यहाँ मेरी शक्ल भूल जाए, लिंक्डइन में पहचान लेगा. तो ठीक है, मेरे भी साथ 16,000 लोग कनेक्टेड हैं, मैं जिनके मैसेज को रिप्लाई करता हूँ. तो हमें कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी को बनाने के लिए बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे. तो मेरा मानना है कि हम उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं जहां हमारे पास बहुत गुड प्रोफेशनल्स हैं. तो लेट्स कोलैबोरेट एंड आगे बढ़ाते हैं इसको. सर, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ. क्या हम एक काम निशांत, 3 लोगों ने अभी स्क्रीन ऑन करी है, मतलब हम 3 लोग इस कॉन्सेप्ट पे एग्री करते हैं. क्या बाकी लोग इस ग्रुप में जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, बाकी अदर पार्टिसिपेंट क्या एग्री नहीं करते क्या? अगर करते तो प्लीज गाइस 2 मिनट के लिए अपनी वीडियो ऑन करो यार, दिखाओ अपनी शक्ल यार. क्या मैं ऑन कर देता हूँ, मैं खाना ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ तो. अभी संडे है ना. नो प्रॉब्लम. Yeah, even I can agree on the point Sumit mentioned, but I feel कि सब लोग अगर चालू कर देंगे तो maybe our bandwidth will chalked up and we will not be able to that is one more discuss the point which want to make. ठीक है, तो 2 मिनट के लिए आप you can show your face, but I feel कि सब लोग अगर ऑन कर लेंगे तो bandwidth chalked up होने का थ्रेट है यहाँ पे. एक चीज और मेरे को ऐड करना था इसमें. जैसे जॉब्स के लिए बात हुई कि अभी जैसे हार्ड टाइम है, तो देयर इज अ टर्म लाइक यू नो पीपल से कि जॉब सिक्योरिटी. आई डोंट बिलीव इन दैट. देयर इज नथिंग कॉल्ड जॉब सिक्योरिटी. एवरीबडी इज रिप्लेसेबल, आइदर कंपनी का सीईओ हो तो भी. तो द थिंग इज वी शुड ऑलवेज, मतलब जो भी आपके पास जॉब है जिस टाइम पे, इट्स नॉट रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट, बट यू शुड यू नो इन्वेस्ट समवेयर
where you can have a alternate source of income, even a minimal one. अगर आपका कहीं से 10,000 भी बनता है या 15,000 भी आप बना सकते हैं अपना, जो जिस टाइम आप जॉब कर रहे हैं, सपोज मेरा 30,000 बन रहा है आज की तारीख में या 50,000 मैं कमा रहा हूँ, तो आई कैन इन्वेस्ट सम अमाउंट इनटू अ स्मॉल शॉप और समथिंग लाइक दैट वेयर आई कैन अर्न सम अमाउंट व्हिच इज इनफ फॉर मी टू सस्टेन. कि मतलब फिर वो, क्योंकि दिस थिंग कॉल्ड जॉब सिक्योरिटी, ये कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है. अगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है एज अ होल, योर जॉब इज सिक्योर. अगर कंपनी में, जैसे अभी पैंडेमिक में वी हैव सीन कि कंपनीज हैव लॉस्ट सो मच मनी, लाइक उबर, इवन उबर, कौन बोल सकता है उबर के पास पैसा नहीं है, बट उबर हैज फायर्ड मोर देन 80% ऑफ एम्प्लॉइज इन इंडिया अक्रॉस सेक्शन. तो ये एक चीज हम लोग को शायद प्रैक्टिस में सबको लानी चाहिए, एंड दिस पैंडेमिक हैज टॉट अस कि वी शुड ऑलवेज हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम अदर देन जॉब. अगर वो मिनिमल भी है, अगर 5,000 या 4,000 रुपए भी आपके बनते हैं उस सोर्स से, मैं ये सिंपल कहता हूँ, आप किसी गांव वाले को या दुकान वाले को एक चाय की दुकान खोल के उसको दे दो, एंड यू हैव मनी व्हाइल यू आर अर्निंग, तो उसमें आपका 10,000 15,000 जाएगा मंथली लेट्स से, लेकिन यू विल हैव अ सस्टेनेबल इनकम कि भाई वो एक सोर्स बन जाएगा आपका चीजें चलने के लिए. तो दैट्स द थिंग व्हिच आई बिलीव इन कि ये सबका अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है पीपल, बिकॉज पीपल कैन नॉट गिव टाइम टू ऑल द एक्टिविटीज एट वंस, बट क्योंकि कंपनीज इज नॉट अबाउट पीपल, कंपनी इज ऑल अबाउट प्रोसेस. दिस इज अ फंडामेंटल थिंग वी नीड टू लर्न. कंपनीज वर्क ऑन प्रोसेस. अगर आज की तारीख में जैसे फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनी है, द पीपल हु स्टार्टेड आर नॉट देयर इन फ्लिपकार्ट, बट स्टिल फ्लिपकार्ट इज वर्किंग बिकॉज दे हैव सेट SOPs एंड प्रोसेस. सो एक ये चीज हमको सोचना पड़ेगा कि if we can do something while we are earning as a source, that is a very good thing. So उस सेंस में अगर आप लोग देखें तो ये सही चीज है. विनोद जी, I truly agree with you. मैं इस चीज को मना नहीं कर रहा हूँ, but well within our professional boundaries. Well within our professional boundaries. Absolutely. Yeah, we are tied up with the organization, so and we must make sure कि हम जो कुछ भी करें वो हमारा जो है प्रोसेस जो है वो that has to be allowed. नहीं सर, मेरा कहने का सेंस इसमें है कि जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कंपनी से कुछ कीजिए, जैसे आई गिव एन एग्जांपल फॉर अ टी शॉप और समथिंग लाइक दैट, मतलब दैट इज नथिंग रिलेटेड टू अगर मैं आज की तारीख में बॉल बेरिंग्स खरीद रहा हूँ तो चाय शॉप का बॉल बेरिंग से कुछ लेना देना नहीं. आई एम जस्ट सेइंग व्हाइल आई एम वर्किंग आई एम गेटिंग अ स्टडी इनकम, आई शुड टाइट माय हैंड्स एंड डू समथिंग व्हिच कैन आई कैन इन द सेंस आई कैन क्रिएट एन अल्टरनेट फॉर अ टाइम बीइंग. आइदर फार्मिंग ही हो, कुछ भी हो, आप पैसे आप इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपके पास 1000 ऑप्शन है कि आपने खेतों में पैसा देके ये लगवा दिया या उससे कुछ आपका इनकम आ गया. आई नो इट्स नॉट रिलेटेड, बट वी शुड लर्न दैट इन वॉक ऑफ लाइफ कि वी शुड ऑलवेज बी नॉट डिपेंडेंट ऑन वन सोर्स. रीजन बीइंग कि दैट सोर्स कैन come and go any time depending on the company performance. So that's why I raised this point ki we should give some rest to Montu. We should form a 2 or 3 people community. Kind of a thing, and we should collaborate and try to understand ki how we should do something which allow us to make sure one thing is कि हम किस तरीके से, मैंने एक वर्ड यूज किया स्टार्टअप, वो कुछ और भी हो सकता है. उससे क्या है कि डेफिनेटली जैसे अभी एक कैंडिडेट ने अभी बोला यहाँ के ऊपर दैट ही इज स्ट्रगलिंग टू गेट अ कॉल, प्रॉब्ली शायद अगर हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, अगर हमारे पास 10 to 15 ऑर्गेनाइजेशंस हो, तो हम उसको पुश कर सकते हैं कि भाई ये बंदा हमारा स्ट्रगल कर रहा है, अगर आप में से किसी के पास कोई अगर जॉब प्रोफाइल हो तो आप दो. डेफिनेटली क्या होगा कि देखिए आप एक इमोशनल कनेक्ट होता है जब आप किसी बंदे को ग्रो कराते हो, वो आपके साथ इमोशनल कनेक्ट उसका होता है. प्रैक्टिकल कनेक्ट तो हमेशा ही होगा, बट इमोशनल कनेक्ट भी होता है कि नहीं यार इन बंदों ने मेरी हेल्प करी, मैं आपकी हेल्प करूंगा. और ऐसा होगा, आउट ऑफ 10 में से 2 या 3 बंदे होंगे जो आपको टर्न डाउन करेंगे. बट आई बिलीव राइट नाउ प्रोफेशनलिज्म हर एक सप्लायर में भी है, हर एक प्रोफेशनल बंदे में भी है. तो क्या होगा कि वो एक दूसरे को हेल्प करेगा. और ये हम इस प्लेटफॉर्म पे कुछ कर नहीं रहे हैं, मतलब आई बिलीव कि हम उसको लेके आएंगे, उसका इंट्रोडक्शन कराएंगे लाइक दैट. हम 2 या 3 चीजों को ड्रॉप डाउन करते हैं मेनू के अंदर, क्योंकि डेफिनेटली मोंटू की फेस आ रहा, अगर उसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन का नेम और लोगो लग के जाएगा तो हाउ वी शुड रिप्रेजेंट, बिकॉज मोंटू इज आल्सो प्रोफेशनल. मोंटू इज नॉट अ सेल पर्सन, मोंटू इज नॉट अ सेल पर्सन कि वो किसी बंदे को सेल ऑफ कर रहा है. तो हमें इन सब चीजों को बहुत डिलिजेंटली आगे लेके चलना पड़ेगा, जिससे मतलब हम एज ए प्रोफेशनल कहीं हिट ना हो, बट डेफिनेटली हम एक दूसरे को हेल्प करने का तरीका ढूंढ रहे हैं. करेक्ट. तो गाइस 2 चीजें निकल के आ रही हैं यहाँ पे. नंबर 1 कि क्या हम एक ऐसी कम्युनिटी या ऐसा ग्रुप बना सकते हैं जहाँ पे हम जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हम किसी को जॉब अपॉर्चुनिटी इस ग्रुप में, विद इन दिस ग्रुप एक दूसरे की हेल्प से बना सकते हैं. नंबर 1.
जॉब कम्युनिटी के लिए हमें क्या एफर्ट डालने चाहिए, वो वी विल डिस्कस इन सेपरेट बायर्स मीट. So probably in next month or so we can arrange another buyers meeting basically. And second point ये निकल के आ रहा है कि क्या हम स्टार्टअप को, क्या हम मेक इन इंडिया, क्या हम लोकल और लोकल फॉर वोकल कॉन्सेप्ट को आगे प्रमोट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं. तो कैसे कर सकते हैं? दैट इज अगेन अ थिंकेबल पॉइंट. 2 चीजें निकल के आई हैं, कुछ और है तो प्लीज यू गाइज आर फ्री टू शेयर हियर. हेलो मोन्टू जी, एक बात बताना चाहता हूँ मैं. जी निशांत. एक्चुअली हम प्रोक्यूरमेंट वाले में व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी हम बंदे कनेक्टेड है, ओके, अगर हम सब लिंक्डइन में कनेक्ट हो जाए, मींस सब बंदे अपना अपना इंडिविजुअल प्रोफाइल का लिंक शेयर करें ग्रुप में, तो हम सब इंडिविजुअल लिंक्डइन में कनेक्ट हो सकते हैं. ओके, पॉइंट टू बी नोटेड. थैंक यू. ओके, सो एक आइडिया मेरे, हाँ बोलिए सुनील, बोलिए, आप बोलिए. आई विल शेयर लेटर. माय नेम इज सुशील राउत फ्रॉम पुणे. एक्चुअली हमें ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए कि जहाँ भी नॉलेज शेयरिंग होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है सब बंदे को जॉब चाहिए, बट बहुत सारे बंदे ऐसे कि उनको पूरा नॉलेज नहीं है अपने प्रोक्योरमेंट रिलेटेड. कोई बंदा उसके रिगार्डिंग कोई बॉट आउट में नॉलेज होता है, कोई इलेक्ट्रिकल में होता है, डिफरेंट कैटेगरी में होता है. तो थोड़ा सा हम जब ये डिस्कस करें ना, उस टाइम हमें थोड़ा सा नॉलेज शेयरिंग में होना चाहिए. मोस्ट ऑफ पीपल, और इस ग्रुप में सीनियर पर्सन बहुत सारे हैं अपने यहाँ. एब्सोल्युटली राइट सुशील. एंड दिस इज ऑनगोइंग प्रोसेस. हम हर महीने में 2 या 3 नॉलेज शेयरिंग सेशन करते हैं. एम आई राइट गाइस? प्लीज करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग. राइट. So this is ongoing process. We are arranging, we are scheduling the different knowledge sharing session. But apart from this, what we can do, like something creative, we have discussed in this forum right away. Number 1, job opening forum, and number 2 is how we can promote startup and how we can help each other. Yep. Montu. Hello. I would like to add one point, which I think it's a knowledge part, not the this startup or something. Yes, it is something somewhere related with the Atmanirbhar Bharat. Just some days back, we had a discussion with our maintenance guy that actually he had come with a list of imported bearings. I will not take the name of company. Maybe that person is in this group itself. But I come to know that imported bearing or domestic bearing, just quoting an example, SKF bearing, so that this company has a single level of quality, or say that similar standard operating procedure across the globe. So that doesn't mean imported hai to wo bahut acha hi hoga. Why not we are trying to the domestic one? Because most of the person are working in MNC itself. I'm not saying MNC है तो हम उसका प्रोडक्ट नहीं लेंगे, स्टार्टअप से ही लेंगे, नहीं. लेकिन एक बात बताने की, क्या हम इस पर वर्कआउट कर सकते हैं इंपोर्ट वर्सेस डोमेस्टिक, इवन विद द सेम मेक, जस्ट लाइक SKF बेयरिंग. इंपोर्टेड का कॉस्ट ज्यादा है कंपेयर्ड विद द डोमेस्टिक. आइटम सेम है, सेम प्रोसीजर से बना है, सेम ब्रांड है, सेम क्वालिटी है. Still their maintenance people are asking that नहीं मेरे को imported ही लाके दीजिए आप, मेरे को imported ही. Even though I had a discussion with SKF guys as well, that quality में such कोई बहुत बड़ा difference कुछ नहीं होता है. I had a discussion with one of my senior who is in Hindalco. He told कि हम बहुत सारी bearing use करते हैं और mostly हम domestic कर चुके हैं. There is no criteria where we can define कि हमको इंपोर्टेड में ज्यादा लाइफ मिल रहा है या डोमेस्टिक में कम मिल रहा है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं. So I'm just quoting an example. Can we do something like that कि इंपोर्टेड को कैसे हम रिफाइन करें विद डोमेस्टिक? एक चीज इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ. इंपोर्टेड लोग इसलिए प्रेफर करते हैं, एक तो उसका क्वालिटी सर्टिफिकेशंस, और दूसरा उसका वारंटी एंड रिकवरी कहिए या रिपेयर का सपोर्ट कहिए, सपोर्ट आफ्टर सर्विस सपोर्ट.
ये कुछ चीजें हैं जिसके लिए ये लोग सभी इम्पोर्टेड चीजों के लिए ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अभी इस Vedant, चीज that's को why I quoted a single company, that name is SKF, जिसका across the globe standard procedure सेम होता है, होना भी चाहिए, I don't know, but होना ही चाहिए 100%। just like मैं जिस MNC में हूँ, यहाँ पे सिंगल लेवल ऑफ क्वालिटी है, सिंगल प्रोसीजर है, इवन मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आर आल्सो सेम। तो मैं उस चीज को कंसिडर करते हुए बोल रहा हूँ कि जहाँ पे एटलीस्ट सिंगल कोई कंपनी है जहाँ पे इंपोर्टेड भी देता है, वही कंपनी डोमेस्टिक भी देता है, बट स्टिल पीपल आर प्रेफरिंग कि नहीं मुझे इंपोर्ट लाके ही दो। तो वहाँ हम आई बाय योर पॉइंट नितिन। उस चीज के लिए हमें क्या करना? Vedant, I want to add something in this point. Sorry. So जिस लोकल हमें लेना है, जिस लोकल आते हैं उसको ही हमें थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा। ये पार्ट आता है वेंडर डेवलपमेंट के सेक्शन में भी। मींस जो हम स्टार्टअप डेवलप करने का बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ वेंडर डेवलप करके भी हम ये चीज को अचीव कर सकते हैं। इस चीज हो रही है, एक तो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो इशू हो रहा है उसको थोड़ा हम रिजॉल्व कर सकते हैं अगर हम हमारे लोकल वेंडर को ही। वेदांत, एक चीज बताओ, ये MNC कंपनी बनी कैसे? ये नीचे से ऊपर जाती हैं कंपनियां, कभी डायरेक्टली ऊपर जाके खड़ी नहीं होती। तो स्टार्टअप अगर इंडियन स्टार्टअप हैं तो क्यों ना हम उसको प्रमोट करें। ये बहुत अच्छा आइडिया मेरे को लगा। और अभी तक एक चीज तो मैं जान गया इस प्लेटफॉर्म से, लोगों को SKF पे तो भले बिलीव ना हो, but people have believe in you. Thank you so much believing in me. I like this question and I sincerely appreciate. मैं किसी बंदे को discourage नहीं कर रहा हूँ, but definitely people looking lot many answer from you. So this is a wonderful, I can say, one experience है. You must feel, I can say one thing, you must feel pride कि definitely people are asking a question which is absolutely out of the box. Absolutely out of the box. थैंक यू सो मच सिन्हा साहब। सो टाइम रियली फ्लाइज यार। दो चीजें निकल के आई हैं दोस्तों यहाँ से। हम एक जॉब कम्युनिटी, यानी कि जॉब को हम कैसे लोगों को साथ में एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सेकेंडली, हाउ वी कैन प्रमोट आवर स्टार्टअप इन इंडिया। सो व्हाई वी कैन हैव अनदर मीटिंग प्रोबेबली इन नेक्स्ट मंथ। व्हाट डू यू से गाइस, शुड वी रियली मीट इन नेक्स्ट वेबिनार और नेक्स्ट ई मीट? I think after दशहरा, क्योंकि next week will be दशहरा, उसके बाद एक डिस्कशन पॉइंट करते हैं, क्योंकि इसको आपको जल्दी करना होगा, अदरवाइज पीपल विल फॉलो, भूल जाएंगे लोग। क्या होता है ना, देखो एवरीबॉडी इज प्रोफेशनल, उनकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि वो इस प्लेटफॉर्म पे तो टाइम दे ही रहे हैं, बट अदर देन दैट दे नीड टू गिव देयर प्रोफेशनल टाइम आल्सो। तो मेरा मानना है कि एक संडे के बाद नेक्स्ट संडे, क्योंकि नेक्स्ट संडे जो होगा वो एक फैमिली संडे होगा, गेट टुगेदर होगा, तो उसके बाद अगर एक प्लान कर लें तो इस डिस्कशन को यही आप हेल्ड अप मत करो, क्योंकि ये लाइफलाइन है। आई बिलीव अगर ऐसा कुछ हम शुरू करते हैं तो एंड ऑफ द डे यार, जो बंदे यंग हैं, हु आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग, यू नो, जिनके मार्केट में कनेक्ट कम्स हैं, वो लोगों को उतना रेफरेंसेस नहीं जान सकते, आप उनकी फीलिंग्स को समझो। ये बहुत टफ है, यू नो। हमारे लिए बात करना आसान है, हम चलो 20-30 पीपल से कनेक्टेड है, वो बेचारे मार्केट में अकेले खड़े हैं, बीइंग ए प्रोफेशनल पर्सन। वो हमसे भी, वो बेचारे बोल भी नहीं पाते हैं यंग होने की वजह से। वो सोचते हैं क्या मैं बोलूं, हिचकते हैं, क्योंकि उनके लिए जॉब मांगना भी एक राइट ऑप्शन नहीं होता है। तो आई थिंक अगर हम ऐसा कुछ करते हैं डियर ना, तो ये एक बहुत सेल्फ बिलीव होगा और हम इनसाइड आउट बहुत अच्छा फील करेंगे। मतलब मैं तो चलो 23-24 साल अपनी इस जर्नी में गुजार चुका हूँ, और मैं ये सारी बात इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं भी उसी थॉट प्रोसेस से गुजरा हूँ, वैसे ही स्ट्रगल किया है। बट आई वाज ऑलवेज बी लकी, क्योंकि मेरे सीनियर्स जितने रहे हैं, दे हैव सपोर्टेड मी वेरी वेल। तो आई थिंक इस प्रोसेस को मत स्टॉप करो। इस करंट सिचुएशन में नॉट इवन यू एंड मी, मतलब ऑल आर फेसिंग चैलेंजेस इफ वी टॉक अबाउट जॉब्स, राइट? सो और ये एक प्राइम फैक्टर रहा है मेरे लिए। मैंने ये ग्रुप बनाया था आप लोगों के सपोर्ट से ही बनाया है अभी तक, और आप लोगों के सपोर्ट से और प्यार से हम अभी यहीं पे हैं, इस स्टेज पे हैं। प्राइमा फेसिया नॉलेज शेयरिंग था और जॉब शेयरिंग था, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि यार ये ऐसा कुछ एकदम कुछ क्रिएटिव करेंगे हम, और कुछ क्रिएटिविटी के लिए आगे हम बढ़ेंगे। सो आई एम टुडे वेरी हैप्पी एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, प्राउड
also. So let us have another meeting, another webinar or e-meet in next month as per your time convenient. दोस्तों, तो आज के लिए कुछ और आप लोग ऐड करना चाहोगे या फिर, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, और मैं कहूँगा यार अब प्लीज जब भी आप लोग आओ ना, एज अ फ्रेंड आओ. यहाँ पे हम एज अ कोई प्रोफेशनल या सीनियर और जूनियर हम एक दूसरे को ज्वाइन नहीं कर रहे. सबसे पहले ये सोचना होगा. और अभी तक 4-5 लोगों ने अपनी वीडियो स्क्रीन शेयर करी है. लेट अस शेयर और शो आवर फेसेस, और लेट अस शोकेस आवर प्रोफाइल एंड शेयर विद ईच अदर. उससे क्या होगा, इंटरेक्शन और कनेक्शन काफी अच्छे वे में जाएगा. अगर हमें चैट ही करना है व्हाट्सएप पे यार, तो फिर उससे अच्छा तो हम चैट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या कहते हो आप लोग? Sorry, I'm just not controlling my emotions today. नहीं, बिल्कुल इंटरेक्टिव सेशन होगा तब जाके ऐसा लगेगा कि कम्युनिटी है. अगर वो ऑफ वीडियो ऑन ऐसा रहेगा तो ऐसा लगेगा कुछ सिर्फ सेशन ही चल रहा है, नॉलेज शेयरिंग सेशन ही चल रहा है, मींस वैसा फॉर्मेट में चलेगा. नहीं तो वो मीट नहीं लग रहा फिर वैसा. वो मीट के लिए फिजिकली हम कनेक्टेड नहीं है, तो कम से कम वर्चुअली तो कनेक्ट हो ही सकते हैं. Correct. So dear friends, for today, let us pause this discussion here right now. And time really flies, so I am really apologize to pause this session or pause this discussion as of now. And we can plan another web meeting or Zoom meeting in next week. And thank you so much for being with us today. It is really nice and pleasure to meet all of you. जय माता की. मिलते हैं अगले सेशन. Thank you Montu. Thank you everyone. Bye bye. Bye bye. Thank you all. Thanks. Thank you you everyone.